Bismillahirrahmanirrahim. Now, student, we are going to discuss the third video of the collision relation for V1 dash and V2 dash. Dear student, we have discussed in the video number 2, and that was collision before and after law of conservation of momentum m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. Keep in mind, and we have discussed and we have reached this equation v1 minus v2 minus v1 dash minus v2. We will use this equation, these two equations, to find the v1 dash and v2 dash. Clear? Now, first of all, I want to write the law of conservation of momentum m1 v1 m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2 v2 dash. This is equation A I want to write. And the second equation, that was v1 minus v2 is equal to v2 dash minus v1 dash. That was the equation. यानी हम इसकी बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद तो मैंने इसको रीअरेंज किया, तो आप इसको भी यहाँ से भी ले सकते हैं, इससे भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, जो भी आप लेना चाहें. Now v1 minus v2 is equal to v2 dash minus v1. Now इसको इधर लेके आए तो आपके पास v2 dash will be equal to v1 minus v2 plus v1 dash. Now put this equation, this is B beta and this is C. Now putting the values of v2 dash in equation A, we will have m1 v1 plus m2 v2 is equal to m1 v1 dash plus m2, and v2 dash की वैल्यू ये है v1 माइनस v2 प्लस v1 dash, या m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 dash प्लस इसको इससे मल्टीप्लाइड करें m2 v1 माइनस m2 v2 माइनस प्लस 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 माइनस, यस, m2 v1 dash. Dear student, जो dash और dash है, remain will be the same side, and the other without dash velocity we will bring into the other side. So we will have, this will be equal to m1 v1 m2 v2, इसको इधर लेके आए तो माइनस m2 v1, दिस इज माइनस, प्लस हो जाएगा m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 dash plus m2 v1 dash, because the without dash we have put it's on the other side, so therefore the two dash will remains. m1 v1 m1 v1 plus m2 v2 plus m2 v2 and m1, so rearranging we will have m1 v1 minus m2 v1 plus m2 v2 plus m2 v2, and taking common here v1 dash, so we will have m1 plus m2 into v1 dash. So this will be equal to m1 minus m2
इंटू v1, इसमें से v1 को कॉमन ले ले एंड दिस इज m1 v2 m2 v2 m2 v2, so this will be equal to 2m2 v2 is equal to m1 plus m2 into v1 dash, dividing both side by m1 plus m2. Here m1 plus m2, m1 plus m2, this will cut, इसको इधर लेके आए तो यहाँ पे लगा ले v1 डैश इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू, इसको पहले लगा ले तो ये हो जाएगा 2m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू, इस भी को ब्रैकेट से बाहर लगा दिया, हालांकि अंदर लगा ले कोई मसला नहीं है, प्लस प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 into v1. This is called the velocity of the particle after collision. यानी आपको पता है कि अगर आप इस बॉडी की वेलोसिटी मालूम करना चाहते हैं तो ये इक्वेशन यूज करेंगे. नेक्स्ट, to find the relation for v2 dash. Now this is assignment for you. मेथड मैं आपको बता देता हूँ. डियर स्टूडेंट, लुक एट द वीडियो. You will use this equation, but change will उर्दू में सुने. देखो मैंने ये इक्वेशन यूज़ किया, ये यूज़ किया, इसमें से मैंने v2 डैश की वैल्यू निकाल दी, इस b से मैंने v2 डैश की वैल्यू निकाल के किस में मैंने दर्ज किया, इसमें दर्ज किया इसकी जगह, और मेरे पास ये आ गया. अब आप कहेंगे इस v1 डैश की वैल्यू जो आएगी v2 डैश वैल्यू आपको जो मिलेगा, आप यहाँ से v1 डैश की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन b से v1 डैश की वैल्यू किस तरह आएगी, आप इसको जो है उधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आएँ. सो v1 डैश में तरतीब से आपको बता देता हूँ. सो इट विल बी इक्वल टू v1 डैश विल बी इक्वल टू v2 डैश माइनस v1 प्लस v2. ये आपका इक्वेशन हो जाएगा फॉर v1 डैश. इस v1 डैश की वैल्यू इस इक्वेशन ए में दर्ज कर ले, इसी तरह रीअरेंज करें, इस जगह डैश वाले को इधर लेके जाएं, इसको इधर लेके आएँ, तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगा v2 डैश विल बी इक्वल टू, इधर 2m1 है सो दिस विल बी 2m1, इधर m2 है तो ये m1 डिवाइडेड बाई m2 इंटू, हियर इज v2, आपको v1 मिलेगा, प्लस m1 minus m2, here will be m2 minus m1 and m1 plus m2 into, इधर हो जाएगा v2. So this is assignment to prove this equation. This is your. Now we will discuss the special cases of the there are 5 to 6 cases to find the v1 dash. Case number 1, m1 is equal to m2. v1 रेस्ट पर है, v2 मोशन में है. v1 डैश क्या होगी, v2 डैश क्या होगी. दूसरा केस, दिस इज टोटली ईटा क्वेश्चन. m1 is equal to m2. v2 is rest, v1 is in motion. v1 डैश क्या होगी, v2 डैश क्या होगी. केस 3, m1 is very very greater than m2 एंड इसको रेस्ट पर ले ले, m1 रेस्ट पर है, m1 इज एट रेस्ट, सो v1 इज इक्वल टू रेस्ट मीन्स 0 एंड v2 मोशन है, सो v1 डैश क्या होगी, v2 डैश क्या होगी.
इसको उल्टा कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास केस 4. I will discuss this is when you give me the positive response comments on the video or any. So we will discuss, and this is totally ETA question, dear students. So I will discuss when you study the 1, 2, 3 video of the collision. Now we will uploading the new video, and that is called projectile motion in some other days.